See, I'm starting. Okay. The first question is like this: the ratio of weight of a body on Earth's surface, and so that on the surface of planet is 9:4. Okay, एक बॉडी का आप जो वेट लेते हैं वो आपका प्लैनेट पे कितना है बच्चे 9, और जो दूसरा प्लैनेट है बच्चे अर्थ पे 9 है और दूसरे पे 4 है, और मास बच्चे आपको 1/9 ऑफ दैट अर्थ दिया गया है वहां पर. तो द रेडियस ऑफ द अर्थ, what is the radius of r is the radius of earth, then what is the radius of planet? Okay, so see, ये बेटा बोला गया कि आपका प्लैनेट का जो मास डेंसिटी है आपको सेम लेके चलना है. तो फर्स्ट ग्रेविटी के टर्म में बच्चे बात करें, जो प्लैनेट आपने लिया है और जो आपने यहाँ पर अर्थ लिया, तो इस पे जो अर्थ और प्लैनेट का, एक अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो रेशियो आ रहा है बच्चों 9:4 है. ओके, मास का रेशियो बच्चे आपको दिया गया यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास. अगर जी की बात की जाए तो आपने फॉर्मूला श्योरली GM/r² करके पढ़ा होगा, है ना. तो GM'/r'², जी कैंसिल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, जो प्लैनेट है उसका मास जो है बच्चे आपका जो m था m/r² लिखा, और जो दूसरा प्लैनेट है उसका मास आपने कितना लिखना है बेटा, आपको m', 9m दिया है, अर्थ का मास का 1/9, तो r'². ओके, यहाँ से m कैंसिल हो गया, और 9r'² डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू 9/4. 9 कैंसिल, r' इज इक्वल टू 4r² एंड r' इक्वल टू 2r. ओके, तो ये जो डिस्कशन आ रहा है बच्चे आपके पास, इसमें r' इक्वल टू r/2 बेटा दिया गया यहाँ पर. तो रेशियो ऑफ वेट आई थिंक 9/4, ठीक है, और सरफेस 9/4, ठीक, GM/r² ठीक, m/m', इज m/9. ओके, तो 9'² डिवाइड बाय r² इक्वल टू, ठीक, r' इक्वल टू r²/4. ओके, एंड देन r' इक्वल टू r'² इक्वल टू r²/4 and r' इक्वल टू r/2. Okay, next Peter, a very interesting question here. The time dependence of the position of a particle of mass m is equal to, given by this, and angular momentum with respect to the origin. नो डाउट ये क्वेश्चन बच्चे आपका ग्रेविटेशन का नहीं है, पर अगर आप इसे रिलेट करना चाहो तो ग्रेविटेशन से शायद ये पॉइंट ऐसे रिलेट होता है. अगर कभी एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बच्चे आप L लिखते हैं, आप इसे चाहो तो सिंपली r×mv लिख सकते हैं आप, है ना. आई विल टेल यू कि भाई इसको मैं कैसे ग्रेविटेशन से रिलेट करूंगा. पोजीशन वेक्टर इज सिंपली 2ti minus 3t²j. ओके, क्रॉस mv, बॉडी का मास कितना दिया गया 2, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इफ यू डिफरेंशिएट पोजीशन वेक्टर you will definitely get velocity. तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चे 2i and 3t² का डिफरेंशिएशन 6tj. This is the velocity of the particle. This is 2i minus 6tj. Done. Now see here, अगर आप बच्चे यहाँ से कॉमन लेते हैं वैल्यूज, तो 2 to 4, और आपके जो डाटा आएगा 2ti minus 3t²j क्रॉस. यहाँ से बच्चे आपने 2 और एक 2 यहाँ से पिक किया तो 4 आया था, एंड दिस वैल्यू इज i minus 6tj. क्लियर. चलो भाई, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे. ये वैल्यू क्या आएगी, अब टोटल 4 टर्म्स आ गए, i क्रॉस i इज 0, j क्रॉस j is 0. What will you get? I cross j, that is 2t minus 6t I cross j. Okay, and minus 3t² j cross I. Okay, the value is like 2t into minus 60 is minus 12t². I cross j is k,
J cross I is minus k cap and this is plus 3t square k cap. Clear? तो वैल्यू विल बी लाइक, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बच्चे, तो माइनस 90 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 36 टी स्क्वायर के कैप. श्योरली ये टर्म आपका नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम माइनस के कैप आना चाहिए. तो दे वांट टू नो द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 2. तो एट टी इक्वल टू 2 बच्चा आपसे पूछा गया था, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा. आर इक्वल टू 2t आई कैप माइनस 3t स्क्वायर जे कैप, वेलोसिटी 2 का आई कैप माइनस 60 जे कैप, और क्रॉस एम वी, एम कॉमन लिया बच्चे यहाँ पे. एक आपने यहाँ पे छोटी सी मैंने मिस्टेक करी थी, दिस वैल्यू विल बी लाइक 3. ओके, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी 2t माइनस 3t, यहाँ पे बच्चे आपके पास माइनस 3t आएगा एंड 3t स्क्वायर दैट वाज करेक्ट, माइनस 6t स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था. माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा तो ये वैल्यू बच्चे मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 into minus 3t square k cap. This is minus 12 t square. T square is 2 whole square into 4 and k cap. Answer is simply minus 48 k cap. अब एंगुलर मोमेंटम बच्चे अगर आपके पास मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यू विल से 48. नाउ हाउ कैन यू रिलेट दिस क्वेश्चन टू ग्रेविटेशन? अगर बच्चे आपको याद हो तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशन वी डिस्कस द टर्म फॉर Kepler's law, like if there is a star and planet is revolving around it, we discuss about aerial velocity. Aerial velocity was area covered in unit time. Done? Now, if area covered in unit time, area covered is A, and this area is covered in time T, the unit time area covered is called A by T. And this term in whole is called aerial velocity. What is the value of aerial velocity? You will say this is equal to L by 2m. Okay, so L is 48. You know the angular momentum. Divide by 2m. Body का mass कितना दिया गया बच्चे यहाँ पर 2 kg. 48 divided by 4 and 12. This is the aerial velocity of the body at this point. Okay. Done. Now, next question. A very interesting question. Try करिए जिन्हें शेष यश. The value of acceleration due to gravity at the Earth's surface is 9.8 meter per second square. The altitude at surface, the gravity decreases to 4.9 is equal to. Okay, surface पे gravity है आपके पास और answer. You can take the radius of Earth as 6.4 into 10 to the power 6 meter. See here, अगर अर्थ की सरफेस से बच्चे आप ग्रेविटी की वैल्यू लेट्स से आप अर्थ पे बात करें, at the surface of Earth gravity is let's say g naught, or they want to know this where you will get half of the gravity g by 2. Okay, so you know very well that g naught is simply gm by r square. Okay, where we get half of gravity, that is gm divided by r plus h whole square. Okay, so technically if you divide this, so g naught divided by g naught by 2, this is one term. gm divide करोगे cancel होगा, r plus h whole square divided by r square. R plus h divided by r is equal to root 2. Similarly, root 2r is equal to r plus h. And if you find the value of height, altitude, where you will get this gravity, the answer will be like root 2r minus r common. Root 2 you can write it as 1.4 minus 1 and radius into 0.4. The radius according to them is 6.4. 6.4 into 0.4 into 10 to the power 6. This value will be like 2.56 into 10 to the power 6 kilometers. Okay, the nearest answer to our solution is 2.6 into 10 to the power 6. Is this clear? In this discussion, we discuss about the variation of gravity. Variation of gravity outside of the Earth is simply g naught divided by
r plus h whole square into r square. And inside the earth, it varies like g0 divided by x divided by r. Gravity at the surface is g0. Inside the earth is g0 x by r. It is measured from the center, and outside of that is g0 r square divided by r plus h whole square, where h is measured from the surface and it is the altitude of the point. Okay. Now, the variation of acceleration due to gravity with distance d from the center is best represented by. So you know very well, I have discussed that from center, variation is like g0 x by r. At center, x equal to 0, gravity will be 0. At surface, gravity will be maximum. And outside of the surface, when you go in to the outer points, gravity will be like g0 r square divided by r plus h whole square. Clear? So inside, variation will be like linear, and outside variation is like hyperbolic. Answer match करना बच्चे यहाँ पे क्या आएगा? This is wrong. This is wrong. This is wrong. The only graph which is giving linear variation inside the earth is C point. So C point must be the answer. Okay. Next. Try this question. Try. Answer according to you is approximation formula is valid till what percent of radius? I can say when you saying that up to what limit approximation is valid. If radius of Earth is 6,400 kilometer, you can apply it for 10-20 kilometers. Okay, but you are going inside the well up to the radius of up to depth of r by 5. R by 5 is approximately, you can say, 1,200 kilometer inside the Earth. So definitely this approximation formula is not valid. Okay, otherwise you are going inside the well. There is no need to apply approximation formula. Okay, I'm picking this question from here. Okay. Can you see the question? A planet of radius r equal to this has a mass density as Earth. Scientists dig a well of radius r by 5 on it and lower a wire of the same length and of linear mass density 10 to the minus 3 kg per meter. Kg per meter means mass of unit length. Okay. So they are giving you lambda of the wire. Okay. And
the planet of radius r equal to 1 by 10 and acceleration due to gravity at the surface 10 meter per second square. Right? If you compare this planet, they are saying this planet is a 1/10 of the radius of Earth. Okay, and gravity at the surface. बच्चे आप चेक करना, gravity at the surface हमने हमेशा क्या लिखा है? We write in terms of gm by r square. Okay, you can write in terms also of density. Mass is 4 pi by 3 rho r cube divided by r square. And the answer will be like 4 pi g by 3 into rho r. Okay. Now, if you talk about new planet, it has same density, 4 pi by g by 3 same. Density same, but radius is r by 10. If radius is r by 10, you will say whole gravity will be like g naught by 10. Okay. G naught by 10 means if gravity at the surface of Earth is 10, then gravity at the surface of this planet will be like 1 meter per second square. This point is clear? Okay. Now, so for this planet, for new planet, you can say gravity is 1 meter per second square at the surface. Okay. Now, how can we approach the question? See here, this is planet, and you are digging a well from here. या बच्चे यहाँ से एक वेल डिग करते हो. लेट्स से आपने यहाँ से वेल डिग करना शुरू किया और वेल डिग करते 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 आप कहाँ तक पहुँच जाते हो? You reach at the distance r by 5 from the center. Sorry, surface. Okay. 4r by 5 from the center and r by 5 from the center. See, अगर इसमें बेटा आप एक वायर हैंग करते हो तो लेट्स से फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट जो आपने लिया है बच्चे, यू विल से टेक वन स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस x from the center. Let's say element length of this element is dx. Okay. Can you tell me the mass of this part? Yes, sir. We can find the mass of this part. That is dm is equal to lambda dx. Okay. Simple. Unit length mass is lambda, dx length, dx mass is lambda dx. Okay. Now, what is the gravitation force acting on this body? Is simply dm into gravitation field, just like QE. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में QE होता है, वैसे आपका इस बॉडी पे dm into g होगा. Next, dm is lambda dx, and gravity is simply g naught. G naught means gravity at the surface, x divided by r. Okay. Now, what is the total force? जितने भी एलिमेंट्स होंगे बच्चे उस पर अर्थ इनवर्ड फोर्स देगी तो ऑल फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन. F is equal to integration of df. No need to take component. Lambda dx g naught x by r. So lambda g naught by r you can take common, and x dx lambda g naught divided by r and x dx. X from limit, see here, from 4r by 5 to r. Okay. आपको यहाँ से चलते चलते चलना है बेटा. 4r by 5 to r. X dx will be like r square minus 16r square by 25. Done. And answer will be like lambda g naught divided by r. R square minus 16r square by 5 is simply 9r square by 25. Okay, r cancel. Then value will be like lambda g naught r divided by 25. Then now we have to solve the value. भाई उन्होंने lambda की value शायद आपको दी थी. They provided you lambda. Lambda is 10 to the power minus 3. Gravity of the surface of this planet is 1. Radius of this planet is simply r by 10. R by 10 is radius of Earth is 6 into 10 to the power 6. 6 into 10 to the power 5. Okay, divided by 25. Answer will be like
10 to the power minus 3, 10 to the power 5, 100 divided by 25 into 6. And answer is simply 24. Okay. The dm equal to lambda dx df dm lambda dx g naught by r. So 9 was here. Lambda near 9. Then 9. 9. And 9 into 24 will be like lambda g naught g naught is 1. Lambda is 10 to the power minus 5. Radius is 16 to the power 6. Okay. R is 16 to the power 6. The value is like lambda g naught r into 9 by 25. Lambda is 10 to the power minus 3. Gravity at the surface of Earth is 10, but at this planet is 1. And r. Now, this r is the radius of the planet. Radius of the planet was given by 1 by 10th. So 6, r was 6 into 10 to the power 6 divided by 10 into 9 divided by 25. Can we get some good value from here? 10 to the power 3, 10 to the power 3, 100. 600 into 9 by 25. And this value will be like 25, 4, 24. 600 divided by 25 is 24 into 9. 24 into 9 will be like 216 Newton. This value is same BMG and dx. One more thing was there, the answer is x dx is x square by 2. Okay, 2 must be here. If you put 2 here, 1 by 2 extra, 1 by 2 extra, answer will be 108. Let me check what is the answer. The answer is 108 Newton. Okay. So you cannot take the approximation here because there is no need to take approximation because you are digging the well up to radius of r by 5. And it's a big displacement inside the earth. Next. A spaceship around a planet a height of 20 kilometers from its surface, isn't it only gravitational field acts on the planet or a spaceship? What will the number of revolution made by the spaceship in 24 around the planet? Okay. So, yes, you got the discussion. Should I repeat that? Yes. You didn't get the latter part. Okay. I will explain it again. It's very simple. First, you have to take a small element inside the wire. Inside the ये वायर आपने बच्चे होल्ड किया हुआ है. अभी वायर बच्चे टनल में ना गिरे तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? The force applied by the earth is 108 Newton. You have to apply 108 Newton upwards so that it remain in equilibrium. Okay. Now see, first part, see here, G naught, gravity. G naught is 4 pi G by 3 into rho into a gravity at the new planet here is saying is G naught by 10 because radius is 1/10. Gravity at this new planet will be like 1 meter per second square. Now, dm is equal to lambda dx is the mass of a small part. The force acting on this small part will be like dm into g. G is the gravitational field at the position of this point, that is g naught x by r. You know this expression now? Gravity inside the earth is g naught x by r. Now, all small elements are pulled by the planet towards the center. The total force is simply integration of dm, lambda dx g naught x by r. You take lambda g naught by r from here, and x dx integration will be like x square by 2.
and r square minus 16 r square by 15, 25. The value will be like lambda g naught by 2r into 9r square by 25. Lambda g naught r by 25 into 2 into 9. The value will be like lambda g naught r by 2 into 9 into 10 by 25. Lambda of the wire is 10 to the power minus 3. Gravity at the surface of this planet is 1. And radius is 6 10 to the power 6 divided by 10, because radius of this planet was r by 10 and 9 by 25. Done. If you solve the value, you will get the answer 108. Yes, this point is clear. Is this clear to all? You can say, type करने की जरूरत नहीं है मेरे को. Yes, this point is clear. Am I audible to you? Krisha, Shesh, Aditya. Yes. Okay. Now for next question, try the question. Try this question. It was asked in 2019 Mains 10th April, second shift. So if you study the question is like there is a planet. Okay. They are constantly changing the planet. जिससे आपका comfort zone बच्चे जो है ना अर्थ को लेके आपसे हटा लिया. Now this is a planet. Okay. And one spaceship is moving around this planet. This is your radial path जिसपे आपका planet के चारों तरफ आपका spaceship turn कर रहा है. Clear? Now they want to know what is the time period of the part. अगर आपको टाइम पीरियड बच्चे याद हो तो सिंपल से टी की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे 2 pi r by v. Okay, 2 pi r. V was like under root g m by r. Okay, so if you square this term, you will get value t square equal to 4 pi square by gm into r cube. What can you put the value of r? Because जो आपने हाइट ली 20 किलोमीटर है और ये 2 × 10⁻⁶ मीटर है, तो h और r जो होगा ऑलमोस्ट सेम लिख सकते हैं. 4 pi square is like 40. G is 6.67 10 to the power 11. Mass of the planet is like 8 into 10 to the power 22. Done. Divided by radius cube. So radius is 2 into 10 to the power 6. If you make whole cube of this value, will be like 8 into 10 to the power 18. आपको ये हाइट लेने की जरूरत नहीं बच्चे. ये 2 into 10 to the power 6. That means 20,000. 2 into 10 to the power 6 means 2,000 किलोमीटर. 2000 किलोमीटर के सामने 20% को आप ड्रॉप कर सकते हैं. Done? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर. कैन यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर? तो जितना बच्चे आप कट कर सकते हो उतना करो ना. 8 इट कैंसिल. वैल्यू विल बी लाइक 40 into 10 to the power 18 divided by 6.67 into 10 to the power 32. 33. This is 6.6 10 to the minus 11. The value will be like 6.67. 8 is cancelled and 10 to the power 11. Okay. तो यू कैन से 6.67 को बच्चे हम 20/3 अगर लिख दें, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 तो 6 into 10 to the power लोअर वैल्यू इज 10 to the power 11, अपर इज 10 to the power 18. तो 6 into 10 to the power 7.
दिस वैल्यू विल बी लाइक 6 into 10⁻⁷. और इसका बच्चे अगर आप रूट लेते हैं यहाँ पर तो 10⁻³ t की वैल्यू बच्चे सॉल्व कर सकते हो. 10⁻³ आपके पास आएगा. अगर मैं 60 के रूट की बात करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 8 into 10⁻³ 8000 सेकेंड जैसा बच्चे आपका आता है. तो ये टाइम पीरियड अगर निकालूं 3600 अगर लिखते हैं तो this value will be like, you have to solve it and compare with the time period of Earth. That is simply 86,400 सेकेंड आता है. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर्स. 24 आवर्स में कितने रेवोल्यूशन बच्चे आपके कंप्लीट होंगे? तो वन रेवोल्यूशन का टाइम अगर इतना है तो 86,440 में 8000 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको मिलेंगे. दिस वैल्यू विल बी लाइक 864 डिवाइड बाय 8. तो अप्रोक्सीमेट आंसर बच्चे हमें यहाँ पे मिलेगा 8 by 8. This one's it. No. 864 divided by 80. Approximately 11 hours. Okay. Next question में चेक करना है. Solid sphere आपने लिया था, mass m radius a is surrounded by uniform concentric sphere of thickness 2a and m 2m. The gravitation field is distance 3a from the center. आपने बच्चे एक solid sphere लिया जिसका mass आपने बच्चे m लिया, radius a लिया. इसको चारों तरफ आपने एक दूसरे shell से कनेक्ट कर रखा है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे, थिकनेस कितनी है 2a, है ना. ये कुछ इस तरीके से बच्चे आपने लिया. तो अंदर वाला जो शेल था उसके बारे में आपको बता देगा मास m है, रेडियस a है. जो कंसेंट्रिक शेल है उसकी थिकनेस 2a है. तो कंसेंट्रिक शेल की थिकनेस 2a है बच्चे, मास 2m है ना. और आपको यहाँ पे 3a पे आपको बताना है बच्चे कितना आपका ग्रेविटेशन फील्ड होगा. तो सिंपल G into m. अगर आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो एक शेल यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. आप एक तरीके से दोनों शेल्स के आउटर पार्ट में है. अगर आप दोनों शेल्स के आउटर पार्ट में हो तो ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G into total mass 3m divided by distance square. Total distance from the center is 9a square. The answer will be like gm divided by 3a square. Answer will be like C option. Okay, gm divided by 3a square. Next, a rocket has to be launched from the Earth in such a way that it never returns. If he is the minimum energy delivered by the rocket launcher, what should be the minimum energy that launcher should have? If rocket is to be launched from the surface of moon, assume that the density of the earth and moon are equal and the earth's volume is 64 times the volume of the moon. Okay, now keep in mind all the things कि भाई जब आप इस तरह के डाटा बोले जा रहे हैं कि वॉल्यूम इतने टाइम से डेंसिटी सेम है तो मास भी आप क्लियर है. मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम होता है. जब द सेम डेंसिटी सेम तो मास भी आपका सेम रेशियो में आएगा. अगर वॉल्यूम 64 टाइम्स है तो श्योरली रेडियस 4 टाइम्स होगी. कीप ऑल थिंग्स इन योर माइंड और ट्राई करिए बच्चे कि आपका मिनिमम एनर्जी, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट व्हाट इज द स्पीड. मिनिमम एनर्जी स्पीड होती तो एस्केप स्पीड होती, दैट इज अंडर रूट 2 gmr. They want to know what should be the minimum energy delivered to the rocket launcher so that it may escape from the moon. Try and give the answer.
What is the answer? See here, बच्चे आप अच्छे से देखो, अगर आप अर्थ की सरफेस पे होते हो तो आपको अगर बॉडी को एस्केप कराना है तो यू नीड टू सप्लाई सम एनर्जी। आप डिफरेंट सिस्टम पे जाते हो और वहां पे आपको वो एनर्जी सॉल्व करनी है। हेयर एनर्जी इज ई, तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा? ई प्राइम। ओके, तो एनर्जी बेटा याद रखना क्या होता था, जो एक्स्ट्रा एनर्जी यू हैव टू सप्लाई इन दिस केस इज लाइक दिस, कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू उसमें ऐड करके जीरो करना है। तो एट अर्थ मास इज m, mass of rotated body is small m, and the radius at this planet is r. The energy you have to provide will be like g mm by r. This is the minimum energy to escape. Now you are going to the another planet where mass is m by 64. Sorry, the density equal the earth volume is 64. Okay, अब अगर earth का volume v है तो इसका v by 64 है. They are having same density. They will say mass is m, their mass is m by 64. So energy at this surface will be like minus g m m. Rocket is same, and at this surface you will say volume is 1 by 64. The radius will be like r by 2. Here radius will be like r by 2. The e prime minus gm by r is equal to 0. The e prime will be like gm by r into 2 by 64. That is 1 by 32. Yeah. This is the value of e prime, and e prime is equal to e by 32. So you have to give this much energy. And if they ask in terms of escape speed, you can say we could under root 2 gm by r. Mass is 1 by 64 and radius is 1 by 32, 1 by 2. तो आप उसकी वैल्यू भी सॉल्व कर सकते थे. Answer is e by 16. Let me check again the answer. Mass is m by 64. Radius is 4, 4. So radius is r by 4. Okay. Radius is 1 by 4. 4 by 64 is 1 by 16. And this value is e by 16. Okay. Next. A rocket is launched along the normal to the surface of Earth, away from the sun, along the line joining the sun and Earth. The sun is 3 into 10 to the power 5 times heavier than the Earth. And this is the distance. दोनों के बीच का distance दिया गया था. Find the escape speed from the Earth gravitation field is 11.2. What is the minimum velocity required for the sun to be able to leave sun or system closest to the, ignore the rotation revolution of Earth in the presence of other thing. Okay. Now see, आप इसको यहाँ से पिक करो बच्चे एंड ट्राई. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये मैंने लास्ट आपको डिस्कशन जो दिया था उसमें भी क्लास में डिस्कस हुआ है, जो जेईई एडवांस वाला मैंने आपको लेक्चर डिस्कस किया था. ट्राई. I'm giving just a minute. A 2 minute is sufficient for this. Right? Okay. See here. Escape speed आपको जो मैंने लास्ट सेम पे डिस्कशन दिया था, escape speed was like this कि अगर आप किसी पार्टिकल को escape करना चाहते हो
So you have to make total energy of that body must be 0. Now see here, if some body is at the surface of Earth, then gravitational potential of that body, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इसको शायद Q into V पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में मास into V, यहाँ पे V पोटेंशियल होगा, तो at the surface of Earth potential will be like mass into potential. No doubt potential नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो पार्टिकल escape कर जाएगा, दैट मीन्स V is equal to escape is equal to -2 times of V. Done? Clear? Now, अगर आप बच्चे इसको यहाँ से escape करना चाहते हो तो इस पॉइंट पे अब आपके पास दो पोटेंशियल्स आएंगे. एक पोटेंशियल ऑलरेडी आपके पास था, अर्थ का पोटेंशियल सरफेस है -gm/r, और जो सन है उससे भी आपका यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी -gm'/r'. डन. तो अगर मैं ये दो वैल्यूज को बच्चे डिवाइड करता हूँ सो दैट आई कैन गेट द रेशियो एंड जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म हो कैंसिल हो जाए, तो ऊपर आपके पास वैल्यू बच्चे कितने आ गए, √(-2) into -gm/r, where r is the radius of Earth and mass of Earth, and -gm'/r' divided by √(-2v) and -2, and v is -gm/r. ओके, तो कुछ वैल्यूज बेटा कैंसिल हो सकती थी, से 2 कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, ये सारे माइनस आपके कैंसिल हो गए, एंड वैल्यू विल बी लाइक in our part value will be like mass divided by r plus mass of planet mass of sun divided by radius of sun divided by m/r. The value will be like √(1 plus r/m into m'/r'. Okay, this value will be like 1 plus m', mass of planet, so mass of sun और mass of earth में कोई रेशियो दिया था बेटा आपको, so mass of sun is 3 into 10⁵ times, m'/m is equal to 3 into 10⁵. And what is distance? Distance is 2.5 into 10⁴. The distance is 2.5 into 10⁴. This value will be like 2.5 into 10⁴. Can we get some good answer from here? 1 plus 30 divided by 2.5. 30 divided by 2.5 is 35/2. 60 divided by 5. Okay. 60 divided by 5 is 12. 1 plus 12, so √13. Okay. The escape speed will be like √13 times of VE. It's not a very good answer, but देखते हैं भाई कुछ अच्छा बने तो √13 times of VE. So we'll get like, if I solve, wait a minute. You can like 3.6 times of VE, 11.2. I think escape speed आपको 11.2 दी गई थी. 3.6 into 11.2, approximately 40 km/h. I think the closest value is 42. Let's check the answer. Like 42 km/s. Okay. Now I will repeat the discussion. Listen. Please understand what is the value of escape speed. Escape speed is for to make the total energy of the projectile is 0. अगर किसी projectile का आपका total energy 0 होगा तो ये escape कर जाएगा. अब जो आप potential energy pick करते हैं, the potential of the system is like mass into potential, similar to Q into V in electrostatics. You can provide some kinetic energy, and providing kinetic energies so that you can make total energy is 0. Now escape speed is like √2 (-2) into potential at that point. If you're projected from Earth, the potential at this point is -gm/r. But if you consider the mass of sun and distance of sun,
तो escape speed आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी. If you are considering this point, then V prime is equal to minus 2 minus Gm by R minus Gm by R prime. This is the potential due to Earth, and this potential due to Sun at this point. Okay. If you divide, V prime divided by V will be like minus 2 cancel, G cancel, M by R plus M by R prime divided by M by R. So this value will be like 1 plus R by M into M prime by R prime. They have told us the ratio of mass of Sun and mass of Earth, and they've also told the ratio of distance and radius of Earth. Okay. By putting these two values, you will get the value of V prime. New value will be like root 30 times of the original escape speed. Original escape speed was 11.2, and if you multiply it by 3.6, we'll get the value approximately 42 kilometer per second. Okay. Can we equate half mv square and gmm by r of both? Can you say it again? Yeah, sir. Can we Yes. equate half mv square, the escape velocity half mv square, Yes. and gmm by r from Earth and Sun? Yes, you can use it. You can use it like this only. You will Okay, get the same answer. okay, sir. Okay. I'm just saying that if you want to know the escape speed, the main crucial point to know the escape speed from the point is the potential at the point due to surrounding bodies. जो भी surrounding bodies का potential होगा, calculate them. If you are predicting it from the surface of Earth and you are not considering effect of sun, potential due to sun is Earth only, that is minus Gm by R. And if you consider the effect of sun also, then potential will be like V1 plus V2. V1 is due to Earth and V2 is due to sun at the point. You will get the same answer. Okay, sir. Okay. Next. A satellite is revolving in a circular orbit at a height edge. Try the question, bitte. Answer. Okay. Listen question that may no increase in the orbital speed so that satellite could escape. तो अगर आपने बेसिक्स अगर याद रखे होंगे तो orbital speed of any satellite will be like under root gm by r, whereas the radius of orbit. At the same point, if you want to escape this body from the attraction field of the planet, the escape speed is like under root 2 gm by r. Okay. So they are asking what is the change, what is the extra speed. If you want to escape, you have to add some speed, and they are interested in delta v. The delta v is the ve minus v naught, and ve is under root 2 gm by r minus under root gm by r. If you take it out, value will be like under root gm by r into root 2 minus 1. And gm by r, if you multiply it by r and r, the r square, so under root gr into root 2 minus 1. This is the answer. So I think D is the answer for this discussion. Next. From a solid sphere of mass m and radius r, a special spherical portion is cut from this. R by 2 बच्चे आप remove करते हो. Taking the gravitation potential V equal to 0 at R equal to infinity. We are assuming that infinity potential is 0. Okay. The potential at the center of gravity, जो आपने center of cavity है, the center of cavity, what should be the potential? Can you find the potential here?
Yes. Can you tell me the approach for this question? We have covered this question in center of mass. We have covered this question in electrostatics. We have covered similar question in moment of inertia. And now you're discussing the same questions, some different contexts. Can you give me the answer? See here. अगर बच्चे आपको कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, if they are providing the solid sphere of mass m and radius r, solid sphere था बच्चे, उसका mass आपको m दिया गया, radius r था. Always divide this discussion into two parts. Okay, one is complete positive mass, and second, where you are saying this, there is no mass, zero mass is here. Assume that at that part we are getting negative mass. Okay, so here total mass is positive. Okay, and here total mass is negative. Now you want to know what is the potential inside the solid sphere. The potential inside the solid sphere is like, do you know the answer, value of potential inside the solid sphere? Yash, Krisha, Jane. Okay. Any answer? We can take the hint from electrostatics. Electrostatics, potential inside the solid sphere was like rho by 6 epsilon naught 3r square minus r square. Okay. Where r was the radius of the sphere and small r is the distance from the center. Okay. Now see here. Rho by 6 epsilon naught. Rho was the charge per unit volume. You can write rho as q divided by 4 pi by 3 r cube into 6 epsilon naught into 3r square minus r square. Done. Now see here, you will get the value like q by 2, okay, q by 2 of 4 pi epsilon naught into 3r square minus r square divided by r cube. What is the value of 4 pi epsilon? This is k cube. So k cube by 2r cube into 3r square minus r square. So what should be the value in terms of gravitation field? In gravitation field discussion, potential is replaced by kq is replaced by simply minus gm. The potential is simply minus gm divided by 2r cube into 3r square minus r square. Done. Now potential due to solid positive sphere will be like minus gm by 2r cube 3r square, and the point you are considering is at, if total distances r, then this point is at r by 2 from the center. R by 2 whole square. Okay. This value will be like minus gm by 2r cube 3r square minus r square by 4. So 3r square minus r square by 4 is a potential due to positive part. And similarly, you can find the potential due to negative part. Due to negative part, potential will be like minus gm by 2r cube into 3r square minus r square. That this point is at the center of the negative charge. This point is at the center of the negative charge. Done. Now see here. So V equal to minus gm by 2r cube. Now potential mass is at this part is m by 8. Radius of this part is r by 2 whole cube and 3 r square. 3 r by 2 whole square.
The total potential at this point is V equal to V1 plus V2. Done. Next. This is simply minus Gm by R. Okay. Try this question. A test particle moving in a circular orbit of gravitational field produced by the mass density rho equal to k by r square. Produced by the mass density rho equal to k by r square. Identify the correct relation between the radius r of the particle orbit and its time period. Okay. एक टेस्ट पार्टिकल है, बच्चे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं. ग्रेविटेशन फील्ड आपने जो रखी है बच्चे, वो सिंपल सी is by mass density rho equal to k by r square. Okay, you have to find the correct relation between T and R. Try.
Sir, mic is off. Sorry, mic is not. So V square is simply G into G4 pi K by R, and this value is V square equal to G into R, and G is simply G4 pi K by R. Okay, them cancel. तो V is constant here. अगर बच्चे V constant होगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू सबको क्लियर है, कितना होता है? 2 pi R by V आता है. Sir, can you tell again? I will explain it again. T by R will be like 2 pi by V. If V is constant, then answer will be like T by R equal to C. The answer is simply T by R is C. Listen, beta. The question is simply totally different from the discussion we have discussed earlier. अभी तक जितने क्वेश्चन होते थे, हम प्लैनेट के चारों तरफ हम सैटेलाइट को टर्न करते थे, और ग्रेविटेशन फील्ड जो होती थी हम सन की या अर्थ की लेके चलते थे, है ना? तो वहां पे हमें क्लैरिटी थी कि वी जो होता था वो सॉल्व करने का मेथड सिंपल होता है. इफ सम प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन दैट फील्ड, तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स वाज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ओके, ये आपके पास बेटा आता था. एक मिनट बेटा, ये स्क्रीन हैंग कर रही है, वेट. ओके, तो वन थिंग वाज श्योर, अगर प्लैनेट के साथ तो सैटेलाइट को आप टर्न करते थे तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स वाज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल. तो mv square by r equal to mg, mv square by r equal to mg, m cancel and v square equal to gr. G is the gravitation field at the point. बट यहाँ पे आपने बेटा जो मास लिया वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्पेस. ओके, तो अगर मैं पूछूं बच्चे जहाँ पे सैटेलाइट आपका टर्न कर रहा है उस पॉइंट के अंदर आपका टोटल मास कितना होगा, तो यू हैव टू पुट टेक अ थिन शेल. थिन शेल का वॉल्यूम कितना होगा? 4 pi r square dr. वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट द मास ऑफ द थिन शेल. एंड इफ यू वांट टू नो दैट ये जो पूरा आपने लिया है स्फीयर, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंसेंट्रिक शेल्स होंगे. सारे शेल्स का मास अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके m की वैल्यू 4 pi k r आई. ग्रेविटेशन फील्ड विल बी लाइक gm by r square. The mass is 4 pi k r divided by r square. So g is equal to g 4 pi k by r. If small g is g 4 pi k by r and the v square is equal to small g into r cancel and v is equal to constant. तो ये जो ग्रेविटेशन फील्ड बच्चे आपने पिक की है ना, इन दिस ग्रेविटेशन फील्ड एट एनी पॉइंट जितने भी आपके पार्टिकल टर्न करेंगे उन सबका स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आ रहा है. If speed is independent of radius, then time period will be like 2 pi r by v and t by r is equal to constant. So this is the new law कि भाई ठीक है आपने चेंज किए हैं, पॉइंट मास की जगह कंसंट्रेटेड मास की जगह आपने डिस्ट्रीब्यूटेड मास लिया है, और डिस्ट्रीब्यूटेड मास आपको पूरा देखना पड़ेगा. डन. This can be remembered, right, for distributed mass? No. Such type of question बच्चे कभी रिमेम्बर आपको याद नहीं करने हैं. हो सकता है एग्जाम में बच्चे ये वैल्यू आपको k by r दी जाती है. ओके,
They may give this value as k by r cube. Okay, so you cannot remember the answer. I should not remember such type of answer. मतलब आपको जरूरत ही नहीं है. You have to think about the concept. And if you are preparing for JEE Mains, जो भी आपके 25 questions होते हैं, at least 6 to 7 question will be of this nature. Tricky. आपका concept definitely आपने पढ़ा होगा, पर आपको वो concept apply करना है. You should not remember the answer. लक है, अगर एग्जाम में आपको यही डिस्कशन फिर से मिल जाता है तो इट्स योर लक, अदरवाइज चांसेस रेयर ही होते हैं. नेक्स्ट, there are two satellites A and B of mass m and 2m in a circular orbit r. B is a circular orbit of 2r. The ratio of their kinetic energy. Okay, you want to know what is the ratio of their kinetic energy. See, अगर आपका एक सैटेलाइट है, मास m का है, 2m का है, रेडियस r है, 2r है, तो आपको सबको बच्चे याद होगा, डिस्कशन शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन आता था हमारे पास. ओके, kinetic energy was like A, potential was like minus 2A and total energy was like minus A. Okay, तो अगर आपसे मैं बात करूं बेटा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल का रेशियो, इफ दे वांट टू नो द रेशियो, तो पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा. रेशियो तो -2 कैंसिल ही होंगे ना, तो रेशियो जो होगा सिंपली जो पोटेंशियल का रेशियो आएगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा. तो पोटेंशियल का रेशियो निकाल सकते हो क्या, P1 एंड P2. तो जो पहला सैटेलाइट था उसके पोटेंशियल बच्चे कितनी होगी, -GM mass of planet divided by small m is revolving in r and 2m is revolving in 2r. तो ये विल से सब पोटेंशियल दोनों की सेम होगी. अगर पोटेंशियल दोनों की सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, 1:1 रेशियो आना चाहिए. डन. नेक्स्ट, a satellite is revolving in a circular orbit at a height h. We have covered this question already कि अगर ऐसा है बच्चे तो v could under root g r root 2 minus 1 करके आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is moving in a with a constant speed in a circular orbit around earth. एक सैटेलाइट था बच्चे जो आपका अर्थ के चारों तरफ टर्न कर रहा था, और इससे आप एक बॉडी को थ्रो करते हो. आपको कितनी स्पीड से थ्रो करना है जिससे आपका द टाइम ऑफ इजेक्शन उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए. सिंपल, you know very well, orbital speed is under root gm by r. Escape is speed is root 2 times of this. अगर आप उसको escape करना चाहते हो तो kinetic energy will be like half mv e square is 2v naught square and half mv naught square आपको पहले दिया था. ठीक है ना, तो सिंपल, अगर नहीं दिया तो 2 cancel, answer will be like mv naught square. तो answer is mv square. Next, the energy required to take satellite to height h E1 and kinetic required to satellite to be in circular orbit is E2. What value of E1 and E2 are equal? Try. बच्चे क्या करते हैं, आप सैटेलाइट को आप किसी हाइट पे जाके स्टैब्लिश करते हो तो E1 एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर आप उसको E2 पे लेके उस हाइट पे लेके जाते हो, स्टैब्लिश करते हो एज अ सैटेलाइट, तो टू थिंग्स आर देयर. फर्स्ट थिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट, एंड नेक्स्ट पार्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट इज दिस. ओके, बोथ आर डिफरेंट. तो अगर आप उसे एच हाइट तक लेके जाते हो बच्चे तो एनर्जी कितनी होगी, तो एच हाइट तक लेके जाने पे आपकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल आर. डन. And kinetic energy required to this in circular orbit is E2, the value of which E1 and E2 are equal. तो टू थिंग्स आर देयर बच्चे, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है. एक बस सैटेलाइट को बच्चे आपको बस वहां पे ले जाके छोड़ देना है, ठीक है ना, और दूसरे में बच्चे सैटेलाइट को वहां पे लेके आपको टर्न करना है. ओके, तो एट फॉर दिस यू हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी, for this you have potential energy as well as kinetic energy. Okay, तो अगर बच्चे मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे x लेता हूं, यहाँ पर
तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल यहाँ पे x होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को x लिखोगे, पोटेंशियल -2x होगी, तो ये आपके पास -2x. They are saying the value of H where E1 and E2 are equal. You have to solve it. पूरा बच्चे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. You don't have any shortcut here. See here, अगर आप उसे H हाइट तक लेके जाते हो तो E1 पे आप सरफेस से लेके गए, सरफेस पे उसकी पोटेंशियल बच्चे कितनी होगी, आप ऐसे लिख दो, डेल्टा यू लिखिए जो आपने उसकी पोटेंशियल बढ़ाई. पोटेंशियल फाइनल इज -GMM divided by R plus H. Initial energy was like -GMM divided by R. So to take this point to this point is जो भी एनर्जी का आपने चेंज किया तो U final minus U initial. Okay. And in second case, the energy you have to provide is, आप सरफेस से लेके जाओगे उसे तो आपको उसे बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या देनी पड़ेगी. So E1 is डेल्टा U plus K. कुछ आपको वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ेगी. तो फाइनल एनर्जी विल बी लाइक -GMM divided by R plus H plus some kinetic energy, and initial energy will be like -GMM divided by R. Okay, तो ये दोनों एनर्जीज बच्चे, जो उसको वहां तक थ्रो करने की एनर्जी है, जो स्टेबल सेटल करने की एनर्जी, दोनों सेम होनी चाहिए. डन. किस साइड पे ऐसा होता है. व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ M फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ M एंड रेडियस R इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2R. बच्चे मिनिमम एनर्जी आपको बेटा रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट, कितनी एनर्जी बच्चों से देनी पड़ेगी जिससे वो सैटेलाइट वहां पे लॉन्च हो पाए, किस रेडियस पे, कहाँ से लेके जाना है बच्चों से, आपको M से लेके जाना है. M पे आपका रेडियस R पे है और वहां से उसे कहाँ पे लेके जाना है, ऑल्टीट्यूड 2R पे. क्लियर. सिंपल से सेम डिस्कशन है जो बच्चे आपने थोड़ी देर पहले किया. इनिशियल एनर्जी बच्चे आपको लिखनी पड़ेगी. इनिशियल एनर्जी में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी -GMM डिवाइड बाय R, और जब वहां बच्चे आप पहुंचोगे तो आपके टोटल एनर्जी क्या होगी, और कुछ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट, यस यश, should I explain all, or because time is very less, just I'm giving you the hint. Okay, angular momentum of planet is moving around the same angular momentum with the aerial velocity. तो आज बच्चे मैंने आपको बताया था aerial velocity की वैल्यू जो होती है simply L/2m होती है. Okay, you have to remember this point. We have discussed this already in the class. A particle moving in the uniform speed circular orbit, central force is inversely proportional to nth power of the r. तो अगर कोई पार्टिकल बच्चे आपके इस तरीके से टर्न करता है, सेंट्रल फोर्स जो है दैट इज mv², जो आपका टुवर्ड्स सेंट्रल फोर्स c/r⁴n है, और आउटवर्ड फोर्स mv²/r से बैलेंस होना चाहिए. तो सिंपल mv²/r is equal to c/r⁴n. ओके, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर. यस सर, v की वैल्यू बच्चे आपको यहाँ से मिलेगी. अगर v मिल गया तो t = 2πr/v. और वन मोर थिंग इज देयर, सिंपल, आपका नॉर्मल केसेस में क्या होता है, 1/r² होता है, तो n की वैल्यू 2 होती है. इफ यू पुट n की वैल्यू 2 रखो तो क्या आपको t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ जैसा मिलना चाहिए. तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴/2. r⁴/2 है बच्चे, आपका क्या d केस में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट, डबल स्टार कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट सिस्टम T = TB. अगर बाइनरी स्टार बच्चे दिए जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, बाइनरी स्टार के केस में क्या होता है, सर एक स्टार आपके पास यहाँ पे आया, सर एक स्टार आपने यहाँ पे रखा. ओके, इस तरीके से, और ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया. तो टेक्निकली क्या होता है बच्चे, बड़ा स्टार तो देखिए इस तरीके से टर्न कर रहा होगा और छोटा स्टार भी आपका ऐसे टर्न करेगा. दोनों अपना राउंड सेम टाइम में कंप्लीट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू बच्चे दोनों केस में सेम होनी चाहिए, T = TB. The four identical particles of mass m located at this speed, if each of the revolves around the influence of the other gravitational field in circular orbit, describing the कितना स्पीड होना चाहिए बच्चे. तो चार पार्टिकल बच्चे आपने m m m के लिए
ये m इसको f4 से खींचेगा, ये इसको m4 से खींचेगा, सामने वाला √2 टाइम्स नीचे आएगा तो f/2 से खींचेगा। क्लियर? ये f और f/2 अगर ऐड करोगे तो f cos 45 लिखोगे तो f/√2 इंटू 2 प्लस f/2 ऐड होगा। तो टेक्निकली अगर इसे रिलीज करोगे तो अंदर आ जाएगा, तो आप इसको अंदर ना आए इसके लिए इसको यहाँ v स्पीड दो जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाए। तो mv²/r से आप इसको बैलेंस कराएंगे। डन। नेक्स्ट, the mass and the diameter of the plate are 3 times the respective of the period of oscillation for simple pendulum is 2 seconds. The period of oscillation अब दूसरे प्लांट पे चेक करना, टाइम पीरियड की वैल्यू जो आती थी 1/√g आती थी। आपके पास एक प्लांट 1 है, एक दूसरा प्लांट 2 है, ठीक है ना। दूसरा प्लानट जो बच्चे आपको दिया गया उसका मास जो था कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था, और डायमीटर भी 3 टाइम्स था। तो सबको पता है ग्रेविटी में gm/r² आता था। अब अगर मास 3 टाइम्स है तो एक 3 का फैक्टर आएगा, है ना। इसके लिए gm/r² आएगा और इसके लिए gm3/9r² आएगा। क्लियर? तो आपकी ग्रेविटी अगर g होगी तो इसकी ग्रेविटी g/3 आएगी। ग्रेविटी बेटा अगर 1/3 हो गई तो टाइम पीरियड श्योरली आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, √3 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर पहले 2 सेकेंड था तो आपका 2√3 होना चाहिए। ओके, तो सी ऑप्शन बेटा बनेगा। नेक्स्ट, 2 स्टार बेटा आपको दिए गया, द 2 stars 3 × 10⁻31 kg, 2 × 10⁻11 rotates in a path at the common center of mass. Emitted pass through the O perpendicular to the star's rotation plane in order to escape from the gravitational field of this double star, the minimum speed. तो बच्चे मैंने आज आपको बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे एक मास m1 हो, एक मास m2 हो, है ना, और आप कहीं पे यहाँ पे पॉइंट से एक दूसरे पार्टिकल को लॉन्च करते हैं जो स्केप कर जाए, तो स्केप करने की शर्त मैंने आपको क्या बताया, √2v पोटेंशियल होना चाहिए, एंड यू कैन फाइंड इजिली पोटेंशियल फ्रॉम दिस पॉइंट। पोटेंशियल इज लाइक -gm1/d1 एंड -gm2/d2। ओके, नेक्स्ट, ये 4 पार्टिकल वाला बच्चा भी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है, सिमिलर डिस्कशन है। सिंपल पैटर्न में बच्चे टाइम पीरियड t1 अर्थ सरफेस पे जब आप उसे r एबव ले जाते हो तो श्योरली अगर r एबव जाओगे तो सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर आपकी ग्रेविटी g है और r ऊपर जाते हो तो श्योरली ग्रेविटी g/4 हो जाएगी, है ना। डिस्टेंस डबल हो जाएगी, ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी। तो टाइम पीरियड बच्चे 2.2 होता था, इसका टाइम पीरियड t आएगा, इसका टाइम पीरियड 2t आएगा। तो t2/t1 की वैल्यू बच्चे 2:1 होनी चाहिए, तो डी आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये डिस्कशन बेटा आपने दिया है यहाँ पे सर ग्रेविटेशन फील्ड का, द वर्क रिक्वायर्ड टू, अब सिंपल से बच्चे ध्यान से, वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट ऑन द एक्सिस टू इंफिनिटी। तो बच्चे वर्क से आप क्या करोगे, उसकी पोटेंशियल में चेंज करोगे। पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, यू फाइनल मास इनिशियल, इंफिनिटी पे जाओगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ इनिशियल मास इनटू पोटेंशियल। ओके, 1 kg की बॉडी अगर आपको दी गई बेटा यूनिट मास, तो माइनस ऑफ v, तो आपका वर्क डन का आंसर माइनस ऑफ v होगा। तो टेक्निकली दे आर आस्किंग व्हाट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। तो यू हैव टू टेक सम रिंग्स हियर, कंसेंट्रिक कोप्लेनर रिंग्स, ओके, और उनका मास लेके बच्चे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पोटेंशियल एट दिस पॉइंट मिलेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते? यू डू नो द फॉर्मूला? वो 1 sec. If it was ring, we can apply the formula, but it is not the ring. So what do you integrate? We have to take small elements here, okay? दिख रहा है बच्चे आपको ब्लू रिंग दिख रही है? या अब इस ब्लू रिंग का अगर आप देखोगे तो आपका रेडियस हो जाएगा 2πr, लेंथ होगा पूरा 2πr, इसका विड्थ बेटा कितना लेंगे आप, dr, इसको किससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी डेंसिटी से, ठीक। और ये जो रिंग होगी उसके लिए अगर पूछा जाएगा तो अगर वो x r डिस्टेंस पर है तो यहाँ से बच्चे आपका ये जितने भी रिंग के पॉइंट्स होंगे सारे इक्विपोटेंशियल होंगे। क्लियर? तो दे विल क्रिएट सम पोटेंशियल हियर। तो v इक्वल टू -gm डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर विल बी लाइक r² प्लस 16r² का अंडर रूट। ओके, तो ये आपका उस ब्लू डिस्क की वजह से आएगी, एंड टोटल पोटेंशियल आपका इसका इंटीग्रेट करके आएगा। रेडियस विल बी लाइक फ्रॉम 3r to 4r। डन? यस सर। I'm little bit fast, but just giving you the hint in last part. Okay. Next, a spherical body. थोड़ा सा बेटा लेंथी डिस्कशन है आपका यहाँ पर।
मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। मिनिमम स्पीड, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, ये भी आपका थोड़ा सा लेंदी है, कल डिस्कशन हुआ है एस्केप में। If the distance in the earth and sun were half of its present number value, तो t square is proportional to r cube लगाइएगा, है ना। t prime square divided by t square is equal to r by 2 divided by r by 2 whole cube, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 1/2 है तो 1/8 करके आ जाएगा, तो t prime इक्वल टू t डिवाइड बाई 2√2। तो जो भी टाइम है आपका ईयर का वो 365 डिवाइड बाई 2√2 कर देना, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। डन। नेक्स्ट, ये बच्चा आज हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग क्या करें, r टू द पावर 1/5/2 कर दें, तो टुवर्ड सेंटर जो फोर्स आएगा वो c डिवाइड बाय r टू द पावर 2.5 आएगा, और ये बैलेंस किससे होगा, mv²/r से। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर। जैसे बच्चे यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय v, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2πr फ्रॉम हियर। डन। तो आई थिंक ये डिस्कशन आपका कवर हो गया, ये कवर हुआ ना। सी दिस क्वेश्चन, दो बॉडी बच्चे आपको दिए गए थे, are kept with a separation 2l, a mass is projected from the midpoint along the line joining their centers perpendicular to the line, the gravitational constant is the current statement। फिर से बेटा सेम डिस्कशन है कि अगर आप बेटा लाइन रखते हो, बीच से आप ज्वाइन करोगे, ये एक मास m है, ये मास m है, और आप बीच में से आप इसको escape कराना चाहते हो, तो सेम आंसर इज देयर, v इक्वल टू -√(-2v). Then the last question is like this here, see last question में क्या बोला गया बच्चे, spherical body of radius r consists of fluid containing densities and equilibrium under its own gravity। एक बेटा आपको spherical body दी गई थी, ओके। इस spherical body का नाम बेटा पूछा गया कि सर ये बॉडी अपने ही इक्विलिब्रियम में, अपनी ग्रेविटी में है, तो आपसे जो प्रेशर आ रहा होगा बच्चे, वो प्रेशर वेरिएशन आपसे पूछा गया कैसे आएगा, ओके। तो सी हियर, आप एक काम करो छोटा सा, ओके, आई विल शेयर यू द शीट, ओके। उसमें बेटा पूरा मैं सॉल्व करके दूंगा, इट विल टेक सम टाइम। ओके सर। तो एक बार रिवाइज कर लो बेटा जितने डिस्कशंस थे आपके। इलास्टिसिटी हम लोग वीकेंड में करेंगे क्या? आज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें इलास्टिसिटी कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। आई थिंक कुछ डिस्कशन इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चन हैं 10-15 जैसे, वो वीकेंड पे कवर कर लेंगे, ओके है ना। ओके सर, कैन यू send me to do you have the video recordings of the previous lectures? I think they are on YouTube also. Okay, ठीक है सर। Please ask to ma'am, Okay आपको sir, मिलेंगे। thank you sir।